Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So today I will discuss sequence and series PYQs with you. These PYQs are from JEE-Main previous year questions. So if you will do these type of questions, you will get a hold on the type of questions which are asked in JEE-Mains. So let's start. Starting with the very first question. The sum of the series मेरे को एक सीरीज दिया है और मेरे को इसका सम पूछा है बेसिकली. तो पहले तो सीरीज को ढंग से लिख देता हूँ ताकि मेरे को सिमेट्री दिखे इसमें. 4/1 फैक्टोरियल प्लस 11/2 फैक्टोरियल प्लस 22/3 फैक्टोरियल प्लस 37/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. ऐसे जा रहा है, ठीक है. तो मेरे को डिनोमिनेटर में तो सिमेट्री दिख रही है कि एक एक करके नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल है बेसिकली. लेकिन मेरे को जब इसका nth टर्म लिखना पड़ेगा टीएन, तो टीएन लिखने के लिए मेरे को सिर्फ डिनोमिनेटर से काम नहीं चलेगा, मेरे को न्यूमरेटर भी बताना चाहिए. तो टीएन के लिए बेसिकली मेरे को न्यूमरेटर भी चाहिए और डिनोमिनेटर भी चाहिए. तो पहले मेरे को डिनोमिनेटर तो मेरे को पता है कि मैं एन फैक्टोरियल लिख दूंगा डिनोमिनेटर में, तो बट आई डोंट नो दैट व्हाट आई विल राइट इन द न्यूमरेटर सेक्शन. तो उसके लिए मेरे को न्यूमरेटर से अलग डील करना पड़ेगा. ठीक है. तो न्यूमरेटर की सीरीज क्या है मैं एक बार वो लिखता हूँ. न्यूमरेटर की सीरीज कुछ इस टाइप की है. 4, देन 11, देन 22, देन 37 एंड देन सो ऑन. ठीक है. ये मेरे को दिया हुआ है मेरा सम. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे को सिमेट्री दिख रही. मैं सिमेट्री लाने के लिए इसको एक टर्म आगे करके लिख रहा हूँ. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम बेसिकली राइटिंग इट एज, मतलब बीच में प्लस है यहाँ पे इनिशियली. दिस वॉज माई इनिशियल एस. नाउ अब इसमें मेरे को कोई कोई सिमेट्री दिख रहा है, ना मेरे को, ना ही ये कोई एपी है ना ही कोई जीपी है, क्योंकि 11 - 4 is 7, 22 - 11 is 7, is 11, 37 - 22 is 15. सो इट इज नाइदर एन एपी नॉर अ जीपी. तो इसको एपी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये एक मेथड ही है. हम लोग एक टर्म शिफ्ट करके समीशन लिखते हैं और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बेसिकली. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 11 + 22 प्लस डैश डैश डैश. अब यहाँ पे था nth टर्म, जो भी होगा यहाँ का nth टर्म. ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा n-1 टर्म प्लस nth टर्म जो भी होगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा. तो बेसिकली अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा 0 = 4 प्लस 11 - 4 is 7, 22 - 11 is 11, 37 - 22 is 15. तो मेरे को दिख रहा है अब ये पे बन गई. यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस. सिमिलरली जो अगला टर्म था यहाँ पे वो था कितना, अगला टर्म था 56. तो 56 - 37 कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा 9, 19. तो अगेन 4 का डिफरेंस. तो ऐसे करके मेरे पास एक एपी मुझे मिल गई जहाँ पे मेरे को 4 का डिफरेंस मिल रहा है बेसिकली. ठीक है. ऐसे करके मुझे मिल गया. तो ये डैश 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 ये एक एपी है अप टू n-1 टर्म्स, क्योंकि लास्ट टर्म सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा nth टर्म जो भी था इसका माइनस nth टर्म. ठीक है. तो बेसिकली ये आया मेरे पास. तो इसका जो nth टर्म होगा tn, tn को मैं ले आऊंगा. सो tn इज इक्वल टू, ये मेरी एक एपी बन गई. सम ऑफ n-1 टर्म्स हो जाएंगे ना यहाँ पे. क्यों, क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्म तो है 4. बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे n टर्म्स होंगे, लेकिन
मैंने एन टर्म को तो मैं इस तरफ ले आया, तो ये बचे हुए कितने टर्म्स हो गए मेरे? बचे हुए टर्म्स हो गए मेरे n-1 टर्म्स। ठीक है, तो ये n-1 टर्म्स हो गए। तो मैं इसको एक में डालता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको भी थ्री लिख देता हूँ, क्योंकि थ्री थ्री अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो ये भी पूरी एक में जाएगी, प्लस वन आखिरी में रहेगा। तो सम ऑफ n-1 टर्म्स क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू। सो n/2 अपॉन 2a प्लस n-1d। बट यहाँ पे n जो है वो n-1 के बराबर है, तो 2a प्लस n-2 एंड d इज इक्वल टू 4। सो ये आएगा। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n-1/2 6 - 8 इज -2, सो बेसिकली 4n-2। हाँ, यहाँ पे एक प्लस वन रह गया, वो प्लस वन भी चलेगा साथ में। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2n-1 प्लस वन। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 2n² -2n plus n, which is minus n, basically -2n, it is -2n minus n only, no, so -3n होगा। तो okay, then +1 + 1 +2 basically. So I am getting something like this, but I guess I missed something because I am getting wrong answer. So let us check once again. Okay, n-1/2. These are n terms. How come? Oh, okay, 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 okay. I also took this term, no? So now these are n-2 terms. If I am taking 4, then these are n-2 terms because I also take this term. So total in total, now there are n+1 terms. This n+1 term will go this side because this term is also there, na? So this is not n-1, this would be n only. So this would be n only. This would be n only. Basically, they are not n-1 terms, they are n terms only. So let me make it clear. Okay, so since they are only n terms, because 1 4 is also come from here, so here would be n-1, n-1, so this will also change, and this will also change. So it would become n-1. So first term is my 2a, first term is my 3, that's why. So 6 plus n-1 into 4, which is 4n minus 5, 4n minus 2. 4n plus 2, sorry, n plus 1, so n/2, then यहाँ पे भी n हो जाएगा, n into 2n plus 1. So it would be 2n square plus n plus 1. Got it? So initially what we did, we initially took this 4 also. So number of terms increased to n plus 1, but we took n-1 only. That's why we got the wrong answer. So this is our tn term. Tn implies the nth term. So basically now let me erase all this calculation.
So this is my final answer. So my Tn would be now Tn is equal to Tn is equal to 2n square plus n plus n plus 1 upon n factorial. This is my nth term. Now I just need Sn. So for Sn, I will take sigma of this thing. So I will get sigma 2n upon n minus 1 factorial because 1n will cancel plus sigma n, not n, 1n will cancel, sigma 1 upon n minus 1 factorial again, and finally sigma 1 upon n factorial plus sigma 1 upon n factorial. Cool. Now it is simple. What you can do now is basically you can, this thing is simple, sigma 1 upon n factorial. You know that the expansion of e power x is equal to 1 plus x square upon 2 factorial. If you don't know, then this is just expansion of e power x, so please remember it. Plus x cube upon 3 factorial plus dash dash dash. So this is the expansion of e power x. Now when you will take x equal to 1, you will get 1 plus 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial, so on. So basically you are getting 1 upon n factorial. So sigma 1 upon n factorial is nothing but e minus 1. Okay. Similarly, sigma 1 upon n minus 1 factorial is nothing but uh, again e minus 1. Okay. Because, okay, so we will check it further. And sigma 2n upon n minus 1 factorial. Now you need to cater with this thing. So you can take 2 outside. On taking 2 outside, write this thing as n minus 1 plus 1. So you would be left with sigma. After taking 2 outside, you would be left with sigma converted into n minus 1 plus 1. So sigma n minus 1 upon n minus 2 factorial plus, just take 2 outside. So sigma n minus 1 plus 1 plus sigma 1 upon n minus 1 factorial. So यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा n minus 1 upon n minus 2 factorial, which implies here I did wrong because on the upper side, no, it's correct. I put the value of x as 1. Cool. Now in this side, how will you do this thing? We need to remove n to do this calculation. And how to do so? This n minus 1 will be removed, no? Because we are cancelling n minus 1. So here only 1 will be left. So basically you are getting 2 times n minus 2 factorial. N minus 2 factorial will again be e only. Because since you are doing a factorial of n minus 2 terms, so it is e plus e from here. So basically you will be getting 6e. Now one more thing. Sigma 1 upon n minus 1 factorial. So when you will put x equal to 1, you will be getting e minus 1 equal to 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus dash dash dash. So इसका nth टर्म क्या होगा? So इसका जो समेशन होगा वो क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा
1/n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इसमें मैं n टर्म्स मानूँ तो। सिमिलरली अगर मैं n-1 टर्म्स मानूँ तो मैं सिग्मा n-1 फैक्टोरियल लिख दूंगा इसको मैं। बेसिकली ये सिर्फ e का एक्सपेंशन है, नथिंग एल्स। सो अब मैं इसको कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, आई गेस। 1 second, let me check it. 2e plus it would also be e. So basically you are getting 4e from here, and 1 and 2e minus 1 from here. So basically 4e plus 2e minus 1 is your answer. So it is the same as coming. So it is equal to 6e minus 1. 6e minus 1, which is given here. Okay, so basically this e power x expansion you have to use in this question to solve it. Just take value of x equal to 1, and then you will get your final answer. Okay, so take a look at it. Okay, now so moving on to next question. The sum of the series 1 plus 1 upon 4 into 2 factorial plus 1 upon 16 into 4 factorial plus dash dash dash. So ये भी वही मेरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाला। इसमें मैं वही चीज करूंगा। मुझे पता है ई पावर एक्स का एक्सपेंशन। ई पावर एक्स का एक्सपेंशन मैंने लिखा था क्या होता है, 1 plus 1 upon 2 फैक्टोरियल। बेसिकली ई पावर एक्स मैंने 1 डाल दिया, एक्स लिखूंगा तो एक्स प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, हाँ इसमें एक और चीज, इसमें अगर इसमें n जब n-1 टर्म्स है, तब जो समेशन की वैल्यू है वो e के बराबर है, e-1 के बराबर नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक 1 को उस तरफ ले जाऊंगा। जब मैं e-1 लिखूंगा तब मैं ये बोलूंगा कि जो मेरे बचे हुए टर्म्स है, ये वाले टर्म्स, ये n-1 फैक्टोरियल के बराबर होंगे, n-1 टर्म्स के बराबर होंगे। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइप से जब मैं इसका समेशन लिखूंगा तब मेरे पास सिर्फ ई बचेगा, क्योंकि मैं ई में क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली, मेरे को एक मिनट में इसको क्लियर करके बताता हूँ, मतलब इसमें बहुत टाइम लग गया। 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, जब मैं समेशन ले रहा हूँ ना, जब मैं ले रहा हूँ सिग्मा 1/n-2 फैक्टोरियल, तो ये चीज जो है मेरी सिर्फ ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डैश 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 अप टू n-2 टर्म्स लिख रहा हूँ ना, दिस थिंग अप टू n-2 टर्म्स, मतलब 1 plus 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अपॉन 1/n-2 फैक्टोरियल। सो दिस इज द समेशन फॉर ई ओनली, सो दिस थिंग इज ई। Similarly, sigma 1/n-1 factorial is also e. So 2e plus 3e. But sigma 1/n factorial के लिए मैं e minus 1 क्यों लिख रहा हूँ? For sigma 1/n factorial, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरे को पता है जो e पावर x का एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 plus x² अपॉन 2 फैक्टोरियल करके होता है। तो इसमें क्या होगा, जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ से जब मैं बोलूंगा n टर्म्स है, तो बेसिकली मैं यही से चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल, इसलिए e-1 हो रहा है इस केस में, क्योंकि मैं यहाँ पे सिग्मा 1/n फैक्टोरियल ले रहा हूँ, वरना इन दोनों केस में ये e के बराबर होगा।
तो सिर्फ सिग्मा हमेशा देखना, सिर्फ सिग्मा वन अपॉन एन फैक्टोरियल जो होता है, सिर्फ ये जो होता है इसको मैं ई माइनस वन के अकॉर्डिंग ई माइनस वन के इक्वेट करता हूँ। बाकी सिग्मा वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल हो चाहे सिग्मा वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल हो, दैट वुड बी इक्वल टू ई ओनली। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान रखना। नाउ इसमें ई पावर एक्स का एक्सपेंशन ये हो जाएगा, सिमिलरली ई पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा। बस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। सो माइनस वन, मतलब बेसिकली वन से चालू हो रहा था, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। दिस would actually start from 1. So e power x is equal to 1 plus x. Cool. And then it will go. Now for e power minus x, just replace x with minus x. You will get 1 minus x minus x होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली। तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। तो ई पावर माइनस एक्स में आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस मिलता है। ये प्लस हो गया, अगला माइनस, माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर ई पावर माइनस एक्स। अब मेरे को पता है जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जब ऐड करने पे क्या होगा, जो मेरे नेगेटिव वाले टर्म्स है वो कट जाएंगे, मेरे को सिर्फ इवन टर्म्स मिलेंगे। इवन टर्म्स इन द सेंस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू करूंगा, तो मेरे को क्या बचेगा, आई वुड बी लेफ्ट विथ एक्स, नो आई वुड नॉट बी लेफ्ट विथ एक्स, आई वुड बी लेफ्ट विथ टू, बट सिंस आई एम डिवाइडिंग बाई टू ऑल्सो, सो इट वुड बी वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आपको बस इन दोनों एक्सपेंशन को ऐड करके डिवाइड बाई टू करना था। सो यू विल गेट दिस थिंग। नाउ जो मेरे को चीज़ चाहिए, ये चीज़ मुझे तब मिल जाएगी जब मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू हाफ डालूंगा। एक्स इक्वल टू हाफ डालने पे आई एम गेटिंग द सेम थिंग बेसिकली। सो दिस थिंग इज नथिंग बट ई पावर हाफ प्लस ई पावर माइनस हाफ अपॉन टू, विच इज इक्वल टू रूट ई प्लस वन अपॉन रूट ई। सो बेसिकली हो जाएगा ई प्लस वन अपॉन टू रूट ई। सो ये कुछ नहीं था, ये दोनों क्वेश्चन, दिस वाज जस्ट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ई पावर एक्स एक्सपेंशन। जब आप ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स के एक्सपेंशन को ऐड करके डिवाइड बाई टू करोगे, then you will get this expression, and on putting x value equal to half in this expression you will get your final answer, because x value को हाफ डालने पे मेरे को ये चीज मिल रही है जो मुझे चाहिए थी बेसिकली। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों ही ई पावर एक्स के एक्सपेंशन के एप्लीकेशंस थे। सबसे पहले इसमें थोड़ा टफ था, पहले आपको टीएन तक जाना था, टीएन तक जाने के बाद आपको ई का एक्सपेंशन खोलना था। और ये चीज ध्यान रखना कि सिग्मा वन अपॉन एन फैक्टोरियल ई माइनस वन के बराबर होगा, और सिग्मा वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, दैट वुड बी इक्वल टू ई। फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग सिक्स ई माइनस वन। So this is also an expansion of e power x, and this is also. Coming on to this one, in the expansion of log of 1 upon 1 minus x square plus x cube, the coefficient of x is equal to how much? तो बेसिकली इसमें आपको एक लॉग का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एंड दे आर आस्किंग जब आप इस लॉग के एक्सप्रेशन को खोलोगे तब आपका जो x का कोफिशिएंट होगा तो वो क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको लॉग की सीरीज आनी चाहिए। लॉग की सीरीज क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो लॉग की सीरीज होती है लॉग ऑफ, और लॉग की सीरीज हमेशा वन प्लस एक्स के फॉर्म में होती है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू सॉरी प्लस प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स पावर फोर अपॉन फोर एंड डैश डैश डैश। ये होती है मेरी लॉग ऑफ वन प्लस एक्स के एक्सपेंशन की सीरीज।
अब मेरे को इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन टेक एक्स कॉमन फ्रॉम दिस साइड, सो आई विल बी गेटिंग वन माइनस कॉमन। सो बेसिकली मेरा लॉग के डिनोमिनेटर में ये चीज बन जाएगी। अब मेरे को पता है कि मैं लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सही कर सकता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने वन माइनस एक्स का स्क्वायर का वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स के फॉर्म में टूटेगा ये। तो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू वन प्लस एक्स हो जाएगा। ये कैसे लिखा मैंने ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा वन माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, वाई? बिकॉज वन इट इज समथिंग लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये इस टाइप से हो जाएगा वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। सो यहाँ से मैं वन माइनस एक्स के स्क्वायर को क्लब कर दूंगा और वन प्लस एक्स बच जाएगा। फिर मैंने इसको ऊपर ले गया तो पावर माइनस टू हो गया और यहाँ पे पावर माइनस वन हो गया। ठीक है। नाउ आई नो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इज लॉग ऑफ सम बेस ई ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस log b. So just use the property of log and you will get log a plus log b. So it is log of 1 minus x plus log of 1 plus x. And there is one more property of log, that log of something to the power n is equal to n times log a. So basically जो मेरे पास पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। सो यहाँ पे पावर माइनस वन थी, सो वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई। सिमिलरली यहाँ पे पावर माइनस टू थी, वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई। So finally, I am getting minus 2 times log of 1 minus x minus log of 1 plus x. Now you have the expansion of log. It is log base e. Log base e. Log base e 1 plus x. So यहाँ से x की जगह minus x replace x with minus x. You will get minus 2 times minus x square upon 2 minus x cube upon 3 and dash dash dash. Similarly for 1 plus x you can open it, and then they are asking you the coefficient of x. So for coefficient of x, the coefficient of x in this expansion is, from here you are getting 2 and from here you are getting 1. So 2 minus 1, 1 is the answer. Basically, you need to just convert it in the form of either log of 1 plus x, मतलब log of 1 plus something के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। और फिर जो वहां पे समथिंग आएगा, दैट समथिंग यू विल यूज इन दिस एक्सप्रेशन, x plus x square upon 2 plus x cube upon 3. So to convert it in this expression, we just simplify this expression to get something like this: log of 1 minus x power minus 2, then 1 plus x power minus 1, and then just use the properties of log to separate them, and you will get your final answer for coefficient of x as equal to 1. So this is your question number 3. So I hope you got it. It was fairly simple. Just using the properties of log, you can easily solve this question. So have a look at it. Okay. Uh, Moving ahead. One second. It is alternate plus minus. Sorry, is alternate plus minus. So x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 by 4. So it is something like that. So x minus x square by 2 plus x cube by 3. But since x is minus x, so it will become minus. Similarly here, x plus x square by 2 minus x cube by x minus x square by 2 plus x cube by 3 and so on, but it will not change your answer because here you will get minus x only and here you are getting minus 2x only. So basically your answer is 1, but the expression is alternate plus minus.
So that's what I checked just now. So please remember this thing. The expansions of e power x and log 1 plus x is very important. They are not even used here, but in many more questions. So please remember these expressions. This is for log of 1 plus x, and this is for e power x. Moving on to next one. If Sn is equal to 4 plus 11 plus 21 plus 34 plus dash 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 up to n terms, then 1 by 60 S29 minus S9 is equal to how much? They are asking simple question. So it is again same question which I did in the very first part. For this, you have to just write Sn by moving ahead one term so that you can get AP. And you do this thing whenever you see something like that. The difference here is 7. The difference here is 11. The difference here is how much? 3. The difference here is how much? 24 to 5, it is 34, I think. So it is how much? 21, 34. So it is 14. 13 actually. So the difference here is 13. Here difference is how much? Uh, 34, 50, 16. So basically अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है. So you are getting an AP from difference. तो जब भी आपको डिफरेंस से एक AP मिल रही होगी, whenever you are getting such type of expressions when where difference is constituting an AP, so you can simply write the sum by moving ahead one term and then subtract both the equations. So you will get 0 is equal to 4 plus 7 plus 10 plus 13 plus 16 plus dash dash dash. अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एपी बन गई बेसिकली. ठीक है. बेसिकली यहाँ से भी नहीं, यहीं से बन गई क्योंकि यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है. सो आई कैन इवन रिमूव दिस थिंग. सो आपकी ये पे बन गई 4 to Tn-2. अब इस Tn को उस तरफ ले जाओगे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. सो अभी सिंपल आपका समेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन ईपी वाला फॉर्मूला है. Sn इज इक्वल टू n/2 2 times a plus n-1 into d. n-1 into d, where d is the common difference, a is the first term, and n is number of terms. So n/2 into 2a plus n-1 d is 3. So this is my Tn, and I need to calculate S29 and S9. So I can simply calculate sigma. दोनों पे sigma लगा दो. I know that the formula for sigma n square is this thing. ये आपको याद रखना पड़ेगा. The formula for sigma 1 is equal to n. ये 3 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए सिग्मा एन का. Sigma 1 is equal to n, then sigma n is equal to n multiplied by n plus 1 by 2, and sigma n square is equal to n times n plus 1 2n plus 1 upon 6. And remember one more formula of sigma n cube. This is also asked many times. Sigma n cube is equal to nothing but the square of sigma n, which is n plus 1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर जो होगा, दैट थिंग इज माई सिग्मा इन क्यू. सो मैंने यहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला लगाया, देन आई कैन जस्ट पुट द वैल्यू फॉर एन एंड आई विल गेट माई फाइनल आंसर.
For S29, put n equal to 29. For S9, put n equal to 9. Solve it and you will get your final answer as 223. Fairly simple. Just put on the values and you will get your answer. Cool. So now let's move on to next one. Let the first term alpha and the common ratio R of of a GP be positive integers. So this is a question from GP and the numbers are positive only. If the sum of squares of first three terms is this thing, मेरे को first three terms का square का sum दिया है, then the sum of these three terms और मेरे को sum in terms का बताना है. Basically मेरे को squares का sum दिया है and I need to calculate the square of I need to calculate the sum of these three terms. So how to do this thing? Similarly पहले जो दिया हुआ है वो मान लो. Let the first term be a, second term AR and third term AR square. Simple from GP ये तो मेरे को पता रहता है. Then square them to a square, then a square r square, and then a square r power 4. Square them and add them. This thing is given to us this thing. So from here, you are getting 3 times 0 3 3. Now what I did is I took the LCM of this thing, and when I took LCM, I got this thing. Okay, so you can write it in this form, and I know that this thing is a square times 1 plus r square plus r 4, and here only 11 square is there. So from here I just use my simple symmetry problem, मतलब symmetry मैंने देखी यहाँ पे, and I got a equal to 11, and from the remaining part I can say that 1 plus r square plus r4 is equal to this thing, which is 21 into 13, which is 273. Okay, so from here you can solve for r and you can get the value of r also. You will get r square plus 17 and r square minus 16 equal to 0. But r square equal to minus 17 is not possible because from here you will get complex values and r is not complex. So r equal to complex is not possible because you are saying that GP is only of positive integers. So this thing is neglected and you are only left with r square minus 16 equal to 0. From here you are getting two values for r again, r equal to plus minus 4. But if you will take minus 4, at some point of time you will reach negative values. But you are saying that it only consists of positive integers. So you have to neglect minus 4 also. And finally, 4 is your final answer to this question. So 4 is the final answer. And r is equal to 4 and a is equal to 11. Now you can simply give the sum of first three terms as 11 plus 11 into 4, 44 plus 44 into 4, which is 176. So यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 231. ओके, सो जो मेरे को दिया हुआ था सम स्क्वायर्स का, उसका मैंने एलसीएम निकाला तो आई गॉट समथिंग लाइक दिस. मेरे को पता था कि यहाँ से मैं ये स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म से 11 स्क्वायर था, सो 11 इज माई ए. तो मैंने 11 स्क्वायर को हटा दिया. जो बचा हुआ मेरे पास पार्ट था दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 प्लस 1 is equal to 273, and from there I calculated the value for r. जो possible नहीं थी वो मैंने neglect किया. कौन कौन सी possible नहीं थी? This one was not possible because this was giving me complex answer, so I have to neglect complex one because complex is not possible. Similarly here also I was getting r equal to plus minus 4, but I need to neglect minus 4 because if I will take minus 4 at some point of time I will reach negative values, but on negative values I will not be seeing that it is the GP for positive integers, so I have to neglect minus 4 also since r is need to be greater than 0. So final answer for this question is a equal to 11 and r equal to 4. Cool. So take a look at it. Okay, so now I'm moving to next one. Let n be the nth term of the series this thing. मेरे को कोई series दी है
जो मेरे को दिख रहा है कि 5 + 8 + 14 + 23, सो इट इज नॉट परफेक्ट सीरीज, बट अगेन मैं देख रहा हूँ कि 5 8 - 5 is 3, 14 - 8 is 6, 23 - 14 is 7, 35 - 23 is how much? This thing is 2, 12. Then this thing is 15. 23 - 14 is 9, sorry. Then so on. So basically मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एक एपी बन गई 6 3 6 9 12 15 की। तो बेसिकली ये थ्री थ्री टर्म्स आ रहे हैं इसमें। तो हम वो वाला मेथड लगाएंगे जो हमने अभी तक लगाया था। आई विल राइट एस इन 2 times, and one time I will shift term one one space ahead, and then I will subtract both the equations. So I will get something like this. And in this one, I always told you that since first term is not coming in the AP, neglect this first term and take a in that side. So you would be left with only n minus 1 terms. Initially, these were n terms, and one term came more, so you got n plus 1 terms. Now you are removing this term and this term from the AP, so you will be left with n minus 1 terms. So it is simple, sigma n minus 1, and you know that sigma n minus 1 is nothing but simple summation of AP, number of terms upon 2 into 2a. Here in this case, a is equal to 3. So 6 plus n minus 1. N minus 1 is n minus 1 minus 1. So n minus 2 multiplied by d, which is 3. So you can see that from here you are getting the value of an to be equal to n minus 1 upon 2 multiplied by 6 plus 3n minus 6. So we can say that when I will simplify this, 6 and 6 will get cancelled and you would be left with this thing. Now you can simply take the LCM, you will get 10 plus 3n square minus 3n upon 2. And they are asking you to calculate the summation of this series. So again, Sn is summation, and you need to tell the value of S30 minus A40. So as this is generally T in term. So from here you can calculate the value of A40, put n equal to 40, and you will get. So this thing is how much? 40 square is 1600. 1600 into 3 is 4800 minus 40 into 3, which is 120, plus 10 upon 2. So this thing is equal to 4800 minus 1010, which is 4690 upon 2. So this thing is equal to 2345. So I have got my A40 term, it is equal to 2345. It is as shown here. Similarly, I can calculate sigma. Sigma, I will just apply sigma on this thing. I just told you the value of sigma 1 is n. So it would be 10n plus 3 times sigma n square minus 3 times sigma n. So you know the value of sigma n square is n into n plus 1 n plus 1 2 n plus 1 upon 6 upon 12 upon 6 basically, but 2 into 6 is 12. Then sigma n is n into n plus 1 upon 2. Similarly, sigma 1 is n. So just put on the values. Here they are asking you the value for S30. So in this case, n is equal to 30. So put n equal to 30 and you will get final answer as 13635. Now just subtract 13635 minus 2345 and you will get your answer 11,290. Just here also we are using the same formula for sigma n square, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. And for sigma n, you can use n into n plus 1 upon 2.
Then simply put on the values and you will get your answer. So moving to the last question. Again, summation is given to you for first k terms up to 1 plus 2 plus up to k upon k. This is your sk. And sigma sj square is given to you, which implies the summation of square of the terms. And you need to calculate the values of a, b, c, and d. Okay. So you can see here from that it is the sum of first k terms. And sum of first k terms, you simply use the formula n into n plus 1 upon 2. So instead of n, here they are saying it k. So k into k plus 1 upon 2k. This thing is equal to sk. So sk is k plus 1 upon 2. And here they are taking the summation of squares of s. So sk square is equal to k square plus 2k plus 1 upon 4. And this thing is equal to, they are saying sigma n upon a times bn square plus cn plus d. So apply sigma both sides. You will get 1 upon 4 sigma k square plus sigma 1 plus 2 times sigma k. And here again you can apply the formula. You will get 1 upon 4 n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 plus n, write it, and plus 2 times n into n plus 1 upon 2. Now simplify it, and on simplifying, you will get this thing as your final answer. Now you just need to compare the values of A, B, C, and D. So on comparing, you are getting A equal to 24 because n upon A is equal to n upon 24. So A is 24. Similarly, B is equal to 2, C is equal to 9, and D is equal to 13. So now you have calculated the values for all the four terms, A24, B2, C9, D13. Now you can tell what is asked to you, either the summation of A plus B plus C plus D or whatever is asked. You just need to firstly calculate SK value and then take the summation of its square. You will get your final answer in the form of n, and then just compare both the equations. N upon A times Bn square plus Cn plus D is equal to n upon 24 into 2n square plus 9n plus 13. So from there, you can simply compare both the values and you can get the values of A, B, C, and D. So on getting the values of A, B, C, and D, you have four options. Just check each option one by one. It can be multiple correct also because in J Advanced you have been asked multiple correct questions. So check each and every option like summation, division, subtraction, whatever they are asking, and then you can take the final ones. Okay, then this was for today, and the remaining questions which are left we can solve in the next section. So, okay, thank you.